हेलो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज कमेंट कर दिया करो कि कैसा वीडियो बनाता हूँ मैं एंड ऑन व्हाट टॉपिक डू आई हैव टू मेक वीडियोज। प्लीज कमेंट करिए कि किस टॉपिक में मुझे वीडियोज बनाना है, कौन सा टॉपिक मुझे उठाना चाहिए आपके लिए, आप so that it can be helpful for you guys। तो प्लीज कमेंट करिए इफ यू लाइक। यदि आपको पसंद आता है प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर वेरी क्लोज टू यू, अदरवाइज डोंट ट्राई टू सेंड। Okay, have a good day. Hello everyone, this is Aditya Prajapati and I come from a very small village of Uttar Pradesh which is called Kudupur, and welcome back to the channel guys. And here I am going to tell how can you raise the confidence level, how what do you have to do so that you don't hesitate while speaking English. So I am going to tell a very effective way to counter this difficulty, to counter this fear of speaking in front of anyone in English language. So I am going to tell everything which is really essential for you to know. So I'm going to tell, so without wasting our time, let's get started. तो क्या करना है? For raising your confidence level, you just have to do one thing. You just have to practice before speaking in front of someone. आप कई लोगों के सामने बोलने से पहले आप खुद इतना प्रैक्टिस कर लीजिए so that you have a very proper knowledge about that topic, that in which on which topic do you want to speak in front of someone. जैसे कि आपने कुछ sentences learn किए पहले, आपने just you have learned some sentences कि you just have to speak those sentences in front of your friends. तो पहले आपने उनको learn किया मॉर्निंग में and then you just have to practice those sentences in front of the wall, in front of the mirror. You can use mirror technique is really helpful for you to practice when you are a beginner, when you cannot speak in front of anyone. So you just have to practice in front of the mirror so that there is no one who can make fun of you because you are alone. You can practice in front of the mirror. So ये confidence level increase करने का एक बहुत ही effective manner है. This is an effective manner for raising your confidence level because I can relate those guys who are beginner who just want to improve their English language and they are struggling for speaking and they think that when we are going to speak in front of someone, in front of my friends, they are making fun of me because I'm unable to speak. I know guys, they will definitely make fun of you, but जो मैंने किया, what I have done when I was beginner, so I am just telling you guys, you have to practice before going to speak in front of your friends. आपको इतना ज़्यादा practice कर लेना so that you की probability of making mistakes should be very less, कि आपकी गलतियाँ करने की जो chances हैं वो बहुत ही कम होने चाहिए. आपको इतना ज़्यादा practice कर लेनी पहले कि आप कम से कम गलतियां करें while speaking in front of your friends. यदि आप you are a if you are a very strong guy, so you can speak in front of your friends कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे. मेरी तरह कि when I started learning this language, so I just used to speak in front of my friends. They just used to make fun of me. Some of them were very rude, used to be irritated by me when I used to speak in front of them in starting. तो मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था because I had that confident level that I have to speak come what may. I just have to learn this language come what may, कि कुछ भी हो जाए I just have to learn. कोई भी मजाक उड़ाए, कितना भी मजाक उड़ाए, कुछ भी कर ले, कोई भी हर्डल आ जाए, जस्ट मुझे लर्न करना है क्योंकि इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर मी. ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई जस्ट डोंट वांट टू, आई जस्ट डिड नॉट वांट टू स्टॉप माय लर्निंग प्रोसेस, कि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है फ्यूचर में.
तो मुझे पता था कि ये फ्यूचर में बहुत ही रिलेवेंट होने वाली, बिकॉज आई जस्ट हैव टू स्टडी अ लॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज द मटीरियल इज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज इफ आई हैव टू स्टडी. सो कुछ बुक्स हैं जो इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं. फॉर रीडिंग दोज बुक्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग दोज बुक्स, आई जस्ट हैड टू लर्न दिस लैंग्वेज, अदरवाइज आई विल बी losing the important books that I have to study. And for understanding the newspaper too, that is the Hindu newspaper, is really tough. It is improving my English level, and with that I just had to learn this language so that I can understand the newspaper, because it is going to be really essential for me to understand that newspaper. Otherwise it will be very tough for me to understand the current affairs that I have to study. Only for this I just started learning this language, and I just did not stop the learning that कि कुछ भी हो जाए, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, इट डजंट मैटर फॉर मी. आई जस्ट हैव टू स्टडी एंड आई जस्ट हैव टू स्टडी एंड आई विल स्टडी. आई विल डू इट. आई विल डू माई 110% हार्ड वर्क. और उसके लिए मैंने बहुत सारी टिप्स फॉलो की, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ सेंटेंसेस लर्न करने स्टार्ट किया. जस्ट स्टार्ट लर्निंग सेंटेंसेस, डेली यूजेज सेंटेंसेस, एंड आई यूज्ड टू उनको मैं रट लेता था, उनको I used to memorize them. I used to memorize those sentences, and after that I used to speak in front of the mirror. I used to talk to myself. I used to speak in front of my mobile camera, and after that I am able to speak enough, so I just used to go outside so that I can speak in front of my friends and other one. तो उनके सामने मैं बोलने के लिए प्रैक्टिस करता था. फिर देन आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट. लिसनिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया. लिसनिंग इज मस्ट फॉर इफ यू वांट टू लर्न न्यू लैंग्वेज. यू जस्ट हैव टू लिसन अ लॉट. लिसन टू any songs. If you are going to listen some songs, you just have to listen to only English songs, and you just have to listen to speeches, English speeches. You just have to watch everything in English language. So listening is must. Listening helped me a lot for learning this language. So I'm telling you guys only because of this reason, guys. And I started writing diary. I have written 3 diaries. बहुत ही बल्कि डायरीज मैंने लिखी हुई हैं. स्टार्टिंग में बहुत ही गलतियां करता था. आफ्टर दैट लेकिन मैंने स्टॉप नहीं किया. बिफोर गोइंग टू द बेड आई जस्ट यूज्ड टू राइट माय डायरी बिफोर आई गो टू स्लीप. सोने से पहले मैं 1 या 2 पेज लिखता था डायरी में, इंग्लिश में ही, जो कुछ मैंने किया है अपने दिन में. आई जस्ट यूज टू नोट डाउन एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन माय होल डे. आई जस्ट यूज टू राइट, सोच कर कि मैंने सुबह से क्या किया है, सुबह कितने बजे उठा, फिर मैं फिर उसके बाद क्या किया, मैं स्कूल गया. इस तरीके से मैंने पूरा लिखा करता था अपनी डायरी में. एंड इट हेल्प मी अ लॉट. ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम एबल टू स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, एंड आई एम इम्प्रूविंग नाउ बिकॉज लर्निंग नेवर एंड्स. लर्निंग नेवर एंड्स. कभी जो याद करने की चीजें हैं ना, कभी खत्म नहीं होती हैं. वी जस्ट हैव टू कीप अपग्रेडिंग आवर सेल्व्स टुवर्ड्स द गुड थिंग्स. सो वी जस्ट हैव टू डू हार्ड वर्क. हार्ड वर्क इज द की. विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट लर्न. सो गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, अदरवाइज यू कैन नॉट लर्न दिस लैंग्वेज. एक बहुत ही जरूरी चीज मांगता है ये कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा दूर होना पड़ेगा कुछ महीनों के लिए. अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ टू लर्न दिस लैंग्वेज. आप उसी प्रोसेस में बने रहेंगे हमेशा. इफ यू लाइक माई वीडियो देन डेफिनेटली लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस माई वीडियोज. एंड प्लीज कमेंट कर दिया करिए कि हाउ इज माई वीडियो, हाउ एम आई मेकिंग माई वीडियोज, एंड ऑन व्हाट टॉपिक डू आई हैव टू मेक वीडियोज. प्लीज कमेंट कर दिया करो. एंड हैव अ गुड डे. वी विल मीट इन अनदर वीडियो. बाय बाय.